Highway geometric design. Some basic aspects. What are the requirements of ideal alignment? It should be such that it must be easy to construct and maintain, and also it should be easy for vehicle operation. It should be safe in case of designing the horizontal and vertical curves. The alignment should be selected in such a way that it is economical during construction. Basic requirements of the highway alignment. Short. The alignment must be shortest of the various alternatives available. Naturally, the shortest path between any two points is a straight line, but it will depend upon the topography of the area. Easy. Alignment should be such that the roads must be easy to construct and easy to maintain or repair. Safety. Safety is again basic requirement of a highway alignment, and special care must be taken to align the road in such a way that it must have the safe or minimum side distance and radius of curves. Economical. Road alignment must be designed to have initial cost of construction, maintenance cost, and vehicle operation to a minimum. So it should be economical. Basic requirements, especially on hilly roads. Number one is drainage. Drainage should be perfect. यदि ड्रेनेज सही नहीं होगा तो बाद में रोड्स के लिए डिग्रेड होने के चांसेस या डिटेरियोरेट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. नेचुरली इट शुड बी इकोनॉमिकल. सेफ्टी. Safety is governed by side distance, super elevation and design radius of curves. तो इनकी डिजाइन इस तरह होनी चाहिए और मूवमेंट ऑन रोड शुड बी सेफ. मिनिमम रेजिस्टिंग लेंथ. Unnecessary rise and fall on gradient should be minimized to reduce cost and length of the road. कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हाईवे अलाइनमेंट को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभावित करते हैं? नंबर वन, क्लास एंड पर्पस. किस तरह की रोड बनाना चाह रहे हैं, हमारा बेसिक पर्पस क्या है. नंबर टू इज ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स. किन किन पॉइंट से इसको पास होना जरूरी है. टाइप ऑफ व्हीकल और ट्रैफिक. किस तरह का ट्रैफिक इस रोड पर होगा. ग्रेडियंट. The alignment of roads should be selected so that longitudinal slopes are not steeper than ruling gradient. To achieve this, the alignment might need a deviation from straight line. हमें एक straight path से अलग हटना भी पड़ सकता है to maintain the gradient. Horizontal curves. The alignment of roads should be provided with flat curves where found necessary. In case of national state highways, the radius of horizontal curves should not be less than 230 meters. In order to have minimum radius, the alignment must be changed. चेंज किया जा सकता है रेडियस को मेंटेन करने के लिए अलाइनमेंट. साइड डिस्टेंस. मिनिमम साइड डिस्टेंस हमको अवेलेबल होनी चाहिए जिससे एक्सीडेंट्स नहीं. ऑब्स्ट्रक्शंस. द अलाइनमेंट शुड बी चेंज्ड टू अवॉइड मार्शी लैंड, पॉन्ड्स, वेल्स, ग्रेवयार्ड्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड रिलीजियस साइट्स. यहाँ से अलग हटना कई बार जरूरी हो जाता है. इसके बाद आता है क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स. The alignment should be adjusted so that minimum number of cross drainage works are required. Bridges. While crossing the rivers, the side should be provided all the requirements needed for good bridge construction. Railway crossings. A road alignment should cross a railway preferably at 90 degrees. Formation bed. The selected alignment should be through such areas which provide good formation bed. Earthwork. To avoid excessive cutting or filling, the alignment should be changed where found necessary. यह पॉइंट कहीं ना कहीं इकोनॉमी से भी जुड़ा हुआ है, लागत से भी जुड़ा हुआ है. एग्रीकल्चर लैंड एंड डेंस फॉरेस्ट. द अलाइनमेंट ऑफ रोड शुड बी डिसाइडेड so that costly lands should be avoided. Existing right of way, ROW. In case of upgrading a road, existing right of way should be utilized for curtailing the cost of land acquisition. पहले से हमें राइट ऑफ वे इतना रखना चाहिए कि बाद में आसानी से हम अपग्रेड या एक्सटेंशन कर सकें. पब्लिक डिमांड. The selected alignment of the road should meet the public demand of the area. Perceived theory एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. परसेप्शन, इंटेलेक्शन, इमोशन, पॉलिश. Perception time, it is
Time required for the sensations received by the eyes or ears of the driver to be transmitted to brain through the nervous system and spinal cord. Intellection time, it is a time required for driver to understand the situation. इस पीरियड में क्या सिचुएशन है उसको ड्राइवर समझ सकता है या समझ पाता है वो टाइम. इमोशन, it is the time elapsed during emotion session and other mental disturbance such as fear, anger or any other emotion. Emotions जो बॉडी में आएंगे उसमें कितना समय लग जाएगा. Volition, it is a time taken by driver for final action such as brake application. Now what is sight distance? It is the actual distance that is observed along the road surface which is visible for a driver from a specified height above the carriage wheels. तीन तरह की होती है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस एंड ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस. Stopping side distance, this is defined as side distance that is available for the moving the vehicle in a highway that will enable the driver to stop the vehicle safely without collision with any other obstacle. किसी एक्सीडेंट के पहले वह दूरी जिसमें आसानी से ड्राइवर गाड़ी को रोक सके. ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, it is the minimum distance available for driver to safely overtake the slow vehicle in front of him by considering the traffic in the opposite direction is called overtaking side distance. Now, what are the factors affecting overtaking side distance? कौन कौन से factors हैं जो side distance को प्रभावित करते हैं? Spacing between the vehicles, speed of the vehicle, the gradient, the acceleration, the velocity of vehicle which is overtaken and then coming in the opposite direction. Driver skill, reaction time. Friction between road and the tires, speed of the vehicle, driver's reaction time, कितने समय में ड्राइवर रिएक्ट करता है, gradient of the road.